Also, I have a shoot for. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to a new video of Hustle Bustle with Shy. Also, if you are new to my channel, hi, I'm Shiny Bhomik. I am a full-time content creator, a full-time working woman, and a full-time college student. I'm basically from Coach Bihar, West Bengal, and currently I am living in Pune. I'm living alone and hustling, bustling here. So that is the main motive of sharing with you all my journey of doing multiple things at a time and just hustling together. And if I can motivate you at 0.1% also, then I will be the happiest person in this world. So without any further ado, let's get dive into the video. Hi guys, good morning. I just got ready for my college. So this is my outfit. So now it's already too late. It's 7 o'clock and okay, so I'm done with my college and now I'm going back to home because today I have work from home. So I just came by auto and now I'll go by metro. Then I have to take auto again and then I'll reach home. I just came back home and I've already cooked in the morning, so now I have to get into my work because I'm doing work from home for this week, and yes, and also I have to just work for my contents. I'll just have a fruit juice for myself. Also, I'm trying to balance my diets, and also I'm trying कि I'll eat lots of fruits. एंड ऑल्सो उस दिन अभी आज मैं जिम में जाने वाली हूँ, लाइक जिम के इंक्वायरी करने के लिए. मेरे जो सोसाइटी में जिम है एक्चुअली, वो जिम में लाइक कुछ इश्यूज है. लाइक द ओनर इज सेइंग कि अभी like the gym was free for every tenants, okay, and now they are saying कि no, they have given the gym to a third party, so from now onwards you have to pay it. So there is a conflict going on between me and my owner, that I took this flat in a society, so and I'm paying a higher rent because I'm getting these facilities. So what I'll do if I don't get these facilities, then why I will pay, right? So he was like, I don't know about it, let me just check with the higher managements of the society and all. So there issues are going on, but for that I am just unable to walk out. My workout has been stopped, everything has been just stopped, so not anymore. आई थॉट कि वो जब होगा देखा जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती. बट द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर माई सेल्फ इन दिस ईयर इज़ माई हेल्थ. फॉर दैट आई एम गोना just be crazy because my health is the most priority of this year. So that's why I thought ki I'll just go today and at the in the evening, then I'll just inquire with the other gym nearby of my flat. There I will just get a subscription for 1 to 2 months, and then if this problem solves, then I'll just shift here. लोग fruits juice बनाएंगे, उसके लिए I'm using orange and apple. 1 orange, 1 apple and 1 pomegranate. That's all. मैंने इधर पे सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं.
is the juice. I just slept for 1 hour. Now it's 5 p.m. Just having my coffee and biscuit, and I'm just working on the laptop. I just have to order few things, that is like for renovating my house, like for decorating my house. I'm ordering some few things from IKEA. As in the previous few clips you have seen ki I'm not getting anything from anywhere in any physical store, so I've decided to order something from Amazon and something from IKEA. both mix करके मैं देखूँगी, अभी मैं देखूँगी कि क्या क्या ऑर्डर कर सकती हूँ, तो वैसे करके करेंगे ऑर्डर. So I'm feeling like today is Monday, and Monday's energy I'm not feeling like, because I could do much better, because this is only few of the works. Like I went to college, I shoot Get Ready With Me videos, and I posted that. I'll finalize gym, I will plan shoot for Republic Day, and I'll go through my syllabus and just summer it up so that I can start studying from tomorrow. But I think apart from this, I could do much better, like much more things today, but I'll try to do tomorrow, as I have a week or like work from home for this week. So I'm feeling little bit lazy. I'm feeling like I just slept also, because I'm trying ki I'll not sleep, because if I sleep now, then all the things get delayed, and that I don't like. So from tomorrow the mission is not to sleep. Actually the thing is, मेरे इधर ना सिर्फ बेड है, तो इसलिए बेड पे मतलब मैं जब भी बेड पे बैठती हूँ मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं अभी सब ऑर्डर करने वाली हूँ. तो मैं टेबल भी ऑर्डर करूँगी. सो आफ्टर दैट टेबल रीच, देन सेटअप करने के बाद मैं टेबल पे काम करने बैठूँगी. सो मैं एकदम पूरा सुबह से लेकर रात तक काम ही करूँगी टेबल में बैठ के. मैं जब तक उधर बैठी रहूँगी ना तब तक ठीक है, तब तक आई कैन डू मैनी थिंग्स. बट जब भी मैं बेड में आ जाती हूँ तभी आई फील स्लीपी. आई एम लाइक थोड़ा रील स्क्रॉल कर लूँ एंड ऑल. बट या आई हैव टू चेंज दैट हैबिट. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू finalize that gym now, क्योंकि आज मुझे फाइनल कर. So we'll go to this gym. I'm just checking this out. Yeah, let's go. हो गया मेरा इंक्वायरी. एक्चुअली उधर मैंने ब्लॉग नहीं किया जिम में. आई थिंक दैट इज़ गुड ओनली. लाइक द ओनर इज़ अ लेडी. शी वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड गुड इनिशिएटर. ओके, सो मेरा डिनर हो गया. अभी थोड़ा सा प्लांट्स को पानी दे दूँगी. थोड़ा सा वो लोग ठीक हो रहे हैं एक्चुअली. सो आई थिंक अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों में ही. और मुझे वो खार भी लाना पड़ेगा एक्चुअली, तो फिर थोड़ा अच्छे से ज़्यादा जल्दी हो पाएगा ठीक. मैंने ये चिलीज़ निकाला है पेड़ से, तो ये सूख गया है एक्चुअली. ग्रीन चिलीज़ था, ये पूरा लाल हो गया है. आई एम जस्ट सिटिंग इन द बालकनी एंड journaling for the day. Like it is also a resolution of this year that I'll practice gratitude every single day, and I'll be doing journaling also every single day.
लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो वॉट, कि मैं कुछ दिन से ये स्टार्ट की हूँ कि जस्ट राइट इट डाउन एट द नाइट, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर यू फील, लाइक वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस डे. एंड इफ़ यू सी ना कि मैंने आज तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ वेस्ट किया आज का दिन, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर लाइक कि नहीं, मैंने कुछ भी, एक भी लर्निंग अगर आपका हुआ ना एक दिन में, सो इट्स लाइक कि आप, येस, यू हैव डन समथिंग टुडे. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज का लर्निंग आप समझ के लो, थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताओ, देखो कि थोड़ा सा महसूस करो कि खुद का टाइम, खुद जब देखोगे एकदम शांत एक प्लेस में खुद बैठ के थोड़ा सा सोचोगे ना, तो कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है. लाइक आप लोग को लगेगा कि दिख के लगेगा, सोशल मीडिया में सबको ऐसा लगता है, आप लोग को लगेगा कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, वो है, ऐसा है, कितना अच्छा है. बट ऐसा नहीं है कि आप जो देखते हो ना, वो कभी सब कुछ सच नहीं होता है. सबके लाइफ में ही प्रॉब्लम्स होता है, मेरे भी है, सबके होते हैं. बट इट्स नॉट लाइक कि प्रॉब्लम्स को आप पूरा लाइफ, इट इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर फुल लाइफ. दैट फॉर दैट प्रॉब्लम only you will think all the time, and that you will take tension, and then you'll just misuse it for other reasons, and you'll just कि यही सोच के पूरा दिन बिता दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. सो जस्ट टेक योर टाइम एंड रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द लर्निंग फ्रॉम फॉर टुडे. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. Just practice it for 1 to 2 months. You will definitely see a result in your mental health. The next day. Okay, so I'm just done with my breakfast, and I thought कि like I was not feeling like to be in home and work from there, as yesterday also I told you कि मुझे बेड पे ऐसे वर्क काम करते करते ना बहुत नींद आ जाती है, एंड देन इट इज़ जस्ट नॉट अ प्रोडक्टिव डे at last. So I thought कि I'll go somewhere and work from there. So I'm going to Season Mall. So I will sit in the food court and then I will work. I think that will be a more productive one, and also I'll feel nice. Okay, I just came here. थोड़ा सा अभी काम करूँगी, बहुत सारा काम करना है एक्चुअली. So let's get started. I came back home and done with my lunch, and I was just doing some other works. Now I'll just do some skincare. Then after that I'll go to gym, because I have finalized yesterday that gym जो मैं कल गई थी ना, वो मैंने फाइनलाइज कर दिया है. सो द मेम्बरशिप ऑफ द जिम इज़ 1600 per month. So I took
I took 3 months subscription, so I got it at 4,000. She did some discount. So yeah, from today I'll be starting it. Let's see, because I'm feeling this that I gained a lot of weight, so that's why I have to just revive the process and get back to my fitness vibes. Now let's do the skincare. Okay, so my skin has been so dull since I came back from my home. I don't know why. I've just tap water to my face, and I'm using this Bioderma foaming gel cleanser. I just got this very recently. I heard about it कि it is very good for acne prone skin, and I was just willing to try it. So I don't know कि how will it be working or not, because I got so much of pimples. I don't know why, but yeah, let's see. So the first step is to cleanse my face. Then with the help of a wet wipe, just remove it. मैंने ये फेस शेव रेज़र लिया है उस दिन मिनीसो से. एक्चुअली मैं पहले उसका यूज़ करती थी, वेनस का रेज़र यूज़ करती थी. फिर उसके बाद ना मैंने मिनीसो से अंडर आर्म्स शेविंग का लिया था रेज़र. दैट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैंने फिर से ये फेस रेज़र लिया. आई होप सो कि ये अच्छा होगा. आई डोंट नो. प्लीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि फेस शेव करने से ज़्यादा ये ग्रोथ हो जाता है एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये डिपेंड होता है आपके स्किन टू स्किन के ऊपर. आप एक काम करना, आप थोड़ा सा ट्राई करना एक बार, फिर उसके बाद करना एंड इन्वेस्ट इन अ गुड रेज़र. एंड मैं ऐसे करके करती हूँ. पहले मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ. बहुत खांसी हो रहा था एक्चुअली. ओके, तो पहले पतंजलि का एलोवेरा जेल मैंने पूरे फेस में लगा दिया है. अभी मैं स्टार्ट करूँगी. अपने पास एक टिश्यू पेपर ऐसे रख लेना, क्योंकि वो फिर इधर वो आप वाइप करके इधर रख सकते हो. ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस. ये ऐसे करें, कभी भी ऐसे मत करना. द करेक्ट वे टू यूज़ द रेज़र इज़ टू बेंड इट लाइक दिस एंड डू इट. ठीक है. सो लेट्स गेट. ओके, सो आई एम डन. इसको यूज़ होने के बाद ये रीयूजेबल है. सो लाइक देन ऑल्सो आई प्रेफर कि आफ्टर 5 to 6 यूज़ आप इसको फेंक दो, नया ले लो. बिकॉज 5 to 6 यूज़ के बाद ये उतना अच्छा नहीं होगा स्किन के लिए. सो थोड़ा सा ऐसे वाइप्स के साथ क्लीन करके फिर आप रख सकते हो. ओके, सो मैंने फेस पे थोड़ा आइसिंग कर लिया है. आइसिंग हेल्प्स यू टू ब्लॉक योर ओपन पोर्स. अभी मैं ये रोज़ वाटर लगा रही हूँ. मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम.
moisturizer. I'm ready for gym now. Going. The next day. This is my outfit of the day. I forgot to vlog. I just made breakfast, then got ready, and I'm going to Aminora Mall. I'll walk from there. So let's go. एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम है, बट मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैंने कल भी बोला घर पे बैठ के काम करने के लिए। तो मैं आज कल सीज़न गई थी मैं, बट मुझे ना उधर नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अभी इसमें जा रही हूँ, अमीनोरा मॉल में जा रही हूँ। तो आई थिंक उधर थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा होगा। लेट्स ट्राई दैट वन टुडे। एंड this is my outfit. I'm obsessed with this outfit. This is kind of Japanese look. The next day. Just wearing a sari, but I don't know how to wear it. Let me try with a video, YouTube video. Shooting abhi it's 5:30 and I haven't eat my lunch. I have 5:30, so like जल्दी करके बहुत भूख लगा है। एंड इट्स जस्ट फॉर a 5-second reel. There is so much tamjam we have to do, and it's like full day shoot, and it's, the result is just 5-second reel, but that is also I think very much needed, and outcome should be good. That's why we put so much effort into it. And this is actually this is Saraswati Puja look. So 3 sari I have selected under 1200. So 7:30 p.m. and we just wrap up with the shoot. And now it was planned from like few days back that I want to go to Gurudwara from a long time. I haven't went to Gurudwara like till like this will be the first time I'm going to Gurudwara. So that's why today is Friday, so I thought ki yeah, we'll go today. So that's why it's 7:30 p.m. and we'll just, it's so 30 minutes drive from here, so like it will take some time, but I hope कि कुछ तो टाइम मिलेगा, like around आधा घंटा मैं उधर रह सकती हूँ. So let's go to the Gurudwara. I just after shoot I had a shower and I just wore this kurti and I took this dupatta with me. And now all set to go. It was a very hectic day at shoot. It was a very hectic day for shoot. Like सुबह तो I just woke up and went to the gym. Then I came. Then I went to थोड़ा सब्जी खरीदने, मैंने जैसे बोला. फिर हाँ ये शूट कर रही थी मैं. It was सारी recommendation for Saraswati Puja, as it's like Saraswati Puja is coming within 3 days. So The next day. So just finished the gym. Now we are going to D-Mart, like for grocery shopping, and after that I'll go to we have also, I have a shoot for today, so I have to do that also.
And yeah, let me show you my gym outfit. I'm done with my gym, and this is my outfit. And yeah, it's a man, like if we purchase gym accessories, a good gym accessories, then we get motivation of doing gym more and more, I think so. So yeah, that's the thing. And now I'm going, I'll just put on my jacket. And yeah, that's all about this video, guys. Thank you so much for watching. And if you have got any kind of motivation inside you because of me, then it will be a wholesome vlog. And yes, just think of it if you have got or not. And if you have, then please like the video and keep supporting my channel. I'm just a new vlogger, so I'm trying to vlog as much as possible. I have been doing content creation on Instagram since last 3 to 4 months, but I'm new to YouTube. I have recently discovered my channel and I've started vlogging. So yeah, it will take some time to get in a flow and to shoot every time and to vlog every time and speak fluently. I'm trying my best and I hope I'm delivering the things rightly, and I will try to improve day by day as I can, and that is the main motive of this. So yeah, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अभी बहुत सारा बात कर लिया है, मैं बात ही करती रहती हूँ हमेशा, मुझे पता है, लेकिन इफ यही है स्पेशलिटी मेरे व्लॉग का कि मैं बात बहुत करूँगी, तो इसलिए यू बेयर विथ मी. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, like it and share with your friends who is struggling for hustling. बिकॉज जो आलसी है ना, वो आलसी नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे और थोड़ा सा तो हसल करना बनता है लाइफ में, है कि नहीं. सो see you in the next week's vlog. Basically I upload every Sunday. Every week's vlogs go live on Sunday, so stay tuned for that. And also, if you haven't followed me on Instagram, go and follow me on Instagram. There I put so much of fashion contents and also self-love contents. So it's a kind of, my niche is a kind of combination of self-love and fashion content. If you want to watch that videos, go and follow me on Instagram. I am sure you will love that videos. So yeah, that's all about it. Also, अगर आपको वो सरस्वती पूजा वाला रील देखना है, वो भी आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो. I have already uploaded till now. So yeah, that's all.